Hey, hello all. This is Charvak Lokayata. Let me introduce. Can you hear me? Let me know if you can hear me. So today I'm live with this new topic, and today's new topic, as you all know, as usual, that my live happens on every Fridays and Sundays at 7 p.m. with new topics. So far, we discussed about the social evils in our society, the issues in our society, the problem of superstition, etc., and more so related to the atrocities happening against women in India. But today we will discuss more about economics, and this is more to do with the BJP's current which is what we call as neoliberalization, neoliberalism, or austerity economic policy. That's exactly what we are here to discuss on today's topic. And I'm not sure whether this will be a very long discussion, but I hope people interested in this topic can join. They can share this live, let people know that what is this is austerity economic policy, what is this neoliberal policy which the economists, which the government officials talk about, what is this privatization and why they are doing this, who are the real beneficiaries. This is exactly what we are going to discuss, and this is the real issue. The real issue in India is not whether Hindu is dominant or a Muslim is dominant. The real issue in India is who is the class which is dominant, who is the one which funds the media, who is the one which funds uh, the private corporations, who loans, and what is the economics behind it. That's exactly what is the real issue in India, and that's what we need to discuss. So, to those who are joining this live, who are not aware of this topic और जो लोग ये live को पहली बार देख रहे हैं, I request them to share this live, comment, and of course जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं. Okay. So anybody who thinks that hey BJP is very nationalistic party, yeah, it may be nationalistic in the sense of emotion that as a political party and as an outfit and as a movement it can play around with the people's emotions when it comes to religion, when it comes to faith, when it comes to sentiments through national symbols. But at the core, you might ask, what does it represent at the core? What are its economic policy? I mean, at the core of any country, whether you call it whatever it is, whether a civilization or whether a nation or whether a nation states or a union or whatever you call it, what is the core of every country is its economic policy. And what is the core of BJP's economic policy? To people who think that they are not Western and they're something Bharatiya culture and they're something nativistic sort of, economic policy are absolutely wrong. BJP is not even close to nativist. It's actually more close to Ronald Reagan or Margaret Thatcher or Bill Clinton or, the Pinochet of Chile or Francisco Franco of Spain. Why? Because they are a neoliberal economists. Yeah, that's right. BJP is basically a neoliberalism at its base. Neoliberal economic policy with austerity economics. Now, what does the austerity economic policy says? The mantra of austerity economics goes like this: that majority have to sacrifice their well-being for the good of few corporations. In that lies the well-being of the entire country. That's the mantra of austerity economics. It includes industrial policies, it includes fiscal policies, it includes financial policies. Okay. Religious tension. Religious tension is a byproduct, I would say. At least 70% of the religious tension is a byproduct of huge population and huge unemployment.
Okay, I'm not saying religious tension won't exist. Even after that, religious tension will exist. So that's the reason why we say it's better to be secular, and why we say that in society we need to have education on humanities, so that we reduce religious tension even after one getting employment, even after getting social security, even after getting all the economic benefits. Okay. uh, Anything capitalism, you can take any anti-capitalist position. Communism might be just one of the anti-capitalist position. But today, what is happening in Israel? Who is funding all the wars? At the end of the day, you might ask that question. And who are the banksters who give loans to fund those wars? At the end of the day, those are the real questions. Okay, so let me continue. What is this austerity economy? And there are a couple of good ways to study this. One way is to study neoliberalism. One way is to study the post classical liberal economics of the early 20th century when fascism emerged. So the mantra goes like this, that workers, people who are employees, laborers, they're lazy buggers. They are lazy buggers. They are very lazy people, and they don't work hard enough, and they enjoy eating lot of food. They enjoy getting lot of salary, and they don't contribute. Okay, so that's the perception behind for the proposal of austerity economics. That's what it says basically. But in reality, that's not the case. What austerity policy is, when it comes to what are the things that happens within this austerity economics, is you cut down on the education budget, you cut down on the healthcare budget. Okay, you look at the BJP over the last 9 years, Bharatiya Janata Party with NDA 2 and NDA 3 has been cutting down on education budget. Currently, our education budget stands at 2.4% something. Back in 2014, it was something like 6% or 7% education budget. So government has been cutting down on education budget. Okay, then you might ask, what else have they been cutting down? They have been cutting down on the healthcare budget. Now, you might ask, why are they cutting down on that? Well, because healthcare and education doesn't really work well with the corporation or the corporate interests. So, better what to do? Cut down on the social services. So, you might have seen they ended the subsidy for the poor traveling through train, basically. The government removed the subsidy for the poor or economically backward class who were traveling through train or bogies. Recently, after 2 or 3 years back, they ended that. So that is austerity, classical example of austerity economics. You cut down on the social schemes. Manrega, for example, they have cut down on the number of days people used to work on MG and Rega. They have cut down on that. Another area called social service, right? Social infrastructure. So they have been cutting down on this budget. Okay. And then let's come back to demonetization. So a lot of people, exactly 9 years back, uh, demonetization happened, and it was told that, hey, demonetization is going to remove corruption. Demonetization is, going to remove the fake currency from Indian market. Demonetization is going to curb the terrorist activities in India. Those were the reasons given. Question, those goals, did it really achieve? No. Black money is still in circulation. In fact, the number of currency notes in circulation is more than what it was in 2016. In 2016, we had currency circulation of something like 170 uh, lakh crore. Okay, 170 lakh crore in cash circulation. Okay, today it is 300 lakh crore.
They said they will make a cashless economy. No, it turned out to be opposite. 2023, it's more than what it was in 2016. So that claim that demonetization will make it a cashless economy is gone. That's done away. That's a, you know, false statement. It's a big lie. Then they said it is going to curb terror activities. But by the way, if you look closely, terror activities have continued as usual. I mean, at the worst case, you had Pulwama in 2019. You had recent insurgency and attacks going on in Kashmir. And Chinese occupied Galwan Valley land. We lost 2,000 square kilometer of Galwan Valley. That it is going to somehow curb the terrorism, the militant activity. It hasn't. It has failed to curb even the Khalistanis. We have a resurgence of Khalistan movement like no, like never seen before. Resurgence of it. So the purpose for which demonetization was claimed that it is going to fight out this terrorism and insurgency and the militant has become completely false. We have insurgency of global Khalistan movement, never seen before. Ex-Prime Minister's effigies burnt in Canada. People like Monty Panesar openly support Khalistan movement and they dare to take photo with Ashwini Vaishnav while traveling in a train. You have insurgency of Khalistan movement going on in Punjab, that anybody who criticizes Sikh or Khalistan movement could be killed over a blasphemy. Canada backs this, and India can't do anything. And if India takes action, then US comes and says that, hey, you know what, you did something wrong. We have the evidence that you were complicit. Please come to certain compromise. India cannot raise its voice on this global resurgence of Khalistan movement. Demonetization, if it has done anything, has but robbed the lower middle class and the poor of the savings and the income which they did through hard work. Lot of mothers, lot of sisters from the family who worked hard day in, day out, and they decided that some part of their income they're going to save for, say, future investment or some future emergency need. That has what's been robbed in the name of demonetization. Did it curb black money? Let's look at the latest Swiss data. Go Google the latest Swiss data. Since 2018, the number of Indian money in the Swiss accounts have increased since 2018. Yeah, all the talk of demonetization, fighting corruption. So, to think that demonetization was fighting corruption is also a lie. To say that demonetization will make a cashless economy, it turns out to be false. Demonetization curb or helps to curb terrorism, completely wrong. You had Pulwama attack in 2019, you have Galwan Valley clash in 2020, you had Kashmir resurgent militant activities in Kashmir, which is going on now. Every day we hear the news that our Jawans are getting attacked. And yeah, of course, the good news is that our army too gets its share of success in fighting those insurgency. We have the situation in Manipur. So all the purpose which was touted for the justification of demonetization failed. So who really benefited in demonetization and who faced the loss? Well, middle class people were hit badly in the demonetization. They lost all their hard earned savings. Okay, number one. Number two, small and medium businesses went out completely. Small scale and medium scale businesses which relied on the cash economy of rupees 1000 and rupees 500, okay, they went out of business completely.
Why? Because by the time you stand in queue for 2 3 days, and when there is no business happening for 2 3 days, what do? You're gone bankrupt. That's the end of your business. You cannot revive it. Yeah, lakhs of small and medium scale businesses shut down thanks to people standing in the queue in the line for 2 3 days. It took at least 2 3 days for people to get their notes exchanged, and those time was sufficient to end the small and medium scale businesses to go out of business. Yeah, that's what demonetization did. But demonetization did another thing. It made rich richer. The top 10 defaulters, top 15 billionaire defaulters in our country, their loans were exempt. Their debt was written off. Whose money? All the money collected through demonetization. Yeah. So if this doesn't sound the classical example of austerity economy, where you literally take away the common man or common citizens' hard-earned savings of rupees 1,500 notes, what else is austerity economics? Yeah, demonetization is a classical example. Then what do? You bring in GST, and in the name of GST, you increase the number of items to be taxed while you lower the tax slabs. Okay, you bring down the rates of tax, but you increase the number of items to be taxed. Napkin pad was not taxed, it is being taxed. Rice was not taxed before, rice is under GST. Okay, then what else? Sugar was not being taxed, sugar is taxed. Salt was not in the tax, salt is being taxed. Yeah, reminds the day of British Raj, where there was a salt tax paid to the British government. They used to loot that and send it back to UK. One might ask the same question, where are they sending this time? That's GST for you folks. What GST done is increased the number of consumer items to be taxed. The tax on stationery has been increased to 10%. Stationery items. Yeah, so that children don't go out to school and study, so that they cannot afford to buy stationery items and study. Government thinks that in India, people are privileged enough to use digital education. Yeah, they are so much privileged enough. That's what the government thinks. That's austerity economics, folks. Rich has become richer. The income inequality has grown wider and wider. The top 1% in India owns 40% of our GDP or 40% of the wealth. The bottom 50% pays 64% of the tax in India, whereas the top 1% only pay 30% of the tax. You know, when it should have been the opposite. The top 1% pays 64% of the tax, and the bottom 50% pays 37% of the tax. This should have been opposite. We have more number of the defaulters in our country's economy than in any time. Bankrupt defaulters, looting the money, not paying the debts, and just going out of our country. We are more now than ever in the history of India. Then what else have we done? So I said fiscal policy is like uh, cut down on education, cut down on social service, cut down on healthcare budget, and increase the and fuel tax. Yeah, India has the highest fuel tax in the world you can come across. India has the highest fuel tax. That's right. What does the fuel tax mean? Well, the fuel tax means that prices of items go up.
the prices of fuel goes up. And thanks to that, businesses start firing their employees. Why? Because it's higher prices, they need to maintain their profits. We can't afford to have employees working for us. Let's cut down the workforce. Yeah, that has led to more unemployment than ever before. So they increase the fuel taxes. So what? They led to increase in inflation, and thanks to increase in inflation, the private corporations, because they don't want to give uh, face the loss of money, they have to cut down on the workforce. Number of people have to be removed from the company. Lots of small businesses and petrol pump workers have been thrown out of business. Then you might ask, what else? This is the austerity economics. So consumer is paying more now than ever before. Now question is, has the income increased that much percent? So our tax on fuels have increased by 50%. Have our income and salaries gone by 50%? That's the real question. No. In fact, the RBI interest rates continue to be hovering around 6% or 6.5%. The RBI interest rates. So what else if this is not hitting our workers and the consumers? This is exactly what's happening. And then what else? Increase in the military budget. So while the military budget, I would say it has been stagnant somewhat, and it hasn't been like increasing every year, but there has been somewhat up and down in the military budget. So government spending has gone in military in some areas, but it has gone down in military in some other areas as well. So this is what austerity economics is. Loans and debts of big corporations are, brought down. And then what else? Privatization of PSUs. Reminding you, Narendra Modi is the only prime minister in India to have created zero PSUs. Vajpayee created 17 PSUs. Mind you, Vajpayee, the late prime minister, Atal Bihari Vajpayee, created 17 public sector units. PV Narasimha Rao, who introduced liberalization of Indian market, created 14 PSUs. Manmohan Singh created 23 PSUs. Yeah, that's right. This PM created PSUs despite following a neoliberal or somewhat liberal economic policies. Modi has created zero PSOs, public sector units. Privatization of railways, privatization of airports, privatization of, what do you say, uh, army. Agniveer scheme is a way to privatize the army. Our army and defense sector is also being privatized. So where does this leave India in the long run? Well, India will end up more or less like US of today, which is in much more worse condition than ever before, or we'll end up like Ukraine. At the worst case scenario, if US and the NATO wants to say, hey, you are our neoliberal friend, we do warmongering, you continue to do warmongering, let's end up like Ukraine. Yeah, that's what you are ending up with this so-called austerity economic policy. This is what austerity economics is. Cut down on healthcare, cut down on cut down the budget on healthcare, cut down the budget on social services, cut down on the budget of infrastructure. Okay, cut down on the budget of education. Okay, increases taxes on the consumer or increase the number of consumer items to be taxed,
increase the tax on the fuel, thus leading to inflation of consumer items, and thus leading to the workers and the employees or people who work being fired from the jobs. Okay, reduce the taxes on the rich, reduce the corporate tax, reduce the interest, reduce the corporate tax, reduce, what you say, the taxes on the rich, reduce the, property tax for the top five conglomerates. Okay, increase the interest rates. RBI has been increasing interest rates. Last time it was 5.5. They increased it to 6. Now 6.25 is the RBI interest rates. Increase the interest rates of the RBI. That's right. Then what else? Privatization of state and public sector units, thus leading to more monopoly. We have a country with monopoly of Ambani, Adani, that's it, and few conglomerates. That's what it has come to. Look at US. US doesn't have money to run its own hospitals now. They have become bankrupt. They have a $33 trillion debt, US economy. Yeah. And our trade, and despite all this, has it led to creation of jobs? No. We have the latest CMIE data of last month, which says 10.05% of the youth are unemployed. That's right, 10% unemployment. Inflation, it's around 6%. We have failed miserably even in inflation. When it comes to, uh, 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 if you talk about infrastructure development, we had much better infrastructure development 20 years back than now. 20 years back, we had much better infrastructure development than now. And I'm not joking. We used to get it completed in a shorter period of time rather than now. Most of the infrastructure development that we are getting done is already given as a contract to Chinese companies in India. Education budget is, and this is it helping inflation? No. Is it creating job? No. Then what else is it achieving? Well, it is achieving the income inequality. Bottom 50% becomes poorer. We have 80 plus crore population which is poor, that they have to be given 5 kg of free ration of rice. 5 kg rice free to 80 crore plus people in India. Yeah, that's what the austerity economics has brought down to in India. It is not leading to job creation for majority of these people. Then what else are we left with? Why opposition has failed to highlight this? इन सब की मुद्दे को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? Opposition should do, but as I said, go to Google, type Bharatiya Janata Party and look at their ideology. Under their ideology, it says neoliberalism. Go to Congress, look at their ideology. Under their ideology, it says liberalism. So when it's an issue of liberalism versus neoliberalism, austerity economics is just a common thing, a common term. There is no PSUs under Modi, but they created Ayush Ministry. Ayush was always there. It didn't even require a separate ministry. Ayurved was there, Unani was there, homeopathy was there. It didn't, Siddham was already there even during Congress time, even before other time when Indira Gandhi was Prime Minister, Rajiv Gandhi or Atal Bihari Vajpayee was Prime Minister. So nothing new.
Question is, did it require a separate ministry? I don't think so. Yeah, there have been no PSUs, public sector units, and the government claims to create more IITs, more aims, and whatnot. 95% of the job hasn't even started yet. Yeah, that's right. It hasn't even started yet. So infrastructure pending hasn't, gone up. It has actually gone down. You see the train accidents happening, infrastructure glitch, infrastructure maintenance is not happening properly. So, what is the solution? Well, it's time to reverse the austerity economics. And this is exactly what needs to be done. At least in my opinion, 50% of the tax should come from the top 60%. Bottom 50% should pay the rest. That should be the way to work out. And our middle class has been taking the biggest hits. Middle class is facing not only income tax but the savings tax. There is a tax on even the income tax return. There is a tax, the property tax, increased rent. All these are happening. Yeah, our middle class has been hit badly. That lower middle class has gone back to poverty line, and the upper middle class is bearing all the burden. This needs to change big time. So let me share some of the links which you can check out. So neoliberalism was the economic policy proposed with least amount of government intervention and more of privatization and blah blah blah, etc. Neoliberalism. This was a classical example. Another classical example of this way of economic policy is the story of Chicago boys in 1970s. So in 1970s, Chicago boys did something like this. They said privatize all the public sector units in Chicago, reduce the taxes for the rich, increase the taxes on the consumers by applying taxes on the consumer items, remove subsidies, remove spending on the healthcare, remove spending on the housing, remove spending on the education. That's right. And this is exactly what Pinochet did, the military dictator of Chile, copying from the Chicago boys in the 1970s. A very classical example of what neoliberal policy is, in fact. It's austerity economic policy being told as neoliberalism. That's it. And one should read this book by Professor Clara Mattei, which is about the capital order, how economists invented austerity and paved the way to fascism. So, thanks to this neoliberal austerity economic policies, you have presidents like Donald Trump, Biden, prime ministers like Modi, Netanyahu, fanatic, fanatic presidents like Erdogan, and censorship president like Macron in France.
thanks to this so-called austerity economic policy. And you have billionaires like Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Blackstone, BlackRock Inc. These organizations. Go and check this book out if you don't know. This this actually started in the early 20th century. And the first person, guess what, who implemented this? The first one to implement this was Mussolini in Italy. Yeah, Mussolini in Italy did something close to demonetization, where our prime minister said, come out of your house, take the 1,500 rupee notes and submit in the bank. Mussolini told, hey citizens, come out of your house and give the jewelry and the gold items in the bank. We need to melt and make the gold bars. Please come out. And that included Mussolini's wife, who removed her jewelry and golden rings and submitted it to bank for it to be melted. That's right. That's exactly what this is. And if you still be, and guess what? Who was supporting the Hitler's, oh, sorry, the Mussolini's government with this neoliberal economic policy? UK. UK was supporting it. JP Morgan and the Ford of United States were happy with the economic policies of Mussolini. They were supporting it. So the same UK or Britain which was fighting Axis Italy was the same Britain, UK, which was supporting Mussolini in its early days when he was practicing this austerity economic policies, where he cut down the taxes on the rich. Any country that cuts down the taxes on the rich, you can be rest assured those are the country which will have the highest storage of black money. Black money is nothing but the excess profit or the money which the top businessmen of any country will have, and they would be easily happy to go send those money and those assets to be stored as part of shell company or shell corporations in countries where there is very less tax on the corporations or no tax on the corporation. There are very few countries like that: Cayman Island, British Virgin Island, Falkland Island, Switzerland. These are the countries which is very comfortable for the rich. Yeah, that's why you see amount of money that you see that goes back into Swiss. And I do write blog on the blogger.com blogspot. I have my own Medium article at medium.com where I write blogs. Go check it out. Whatever I have been saying here, I have very detailedly written and discussed about this here in the blogspot. One can go and read this blogspot clearly. Problems behind fifth largest economy is one of the blogspot article that I have written. One can go and check it out. Do share the blogspot link in your WhatsApp or family group and let them know that it's very useful, my articles. I also write in the Medium. One can check out my articles there. So this is my
ID or my account in the medium.com. One can go and check out my articles there, where I write about economy, foreign policy, and I have written recently on the Narayan Murthy's statement of 70 hour per week. That's right. Only a profit driven exploitative mind can say that our youngsters should work for 70 hours per week when countries like Japan are working for only 48 hours. Chinese are working for only 46 hours. Germany is working for 42 hours. Indians are currently working at 52 hours per week. That's right. You sounded right. You heard me right. Indians work already for 52 hours per week. And Narayan Murthy is insisting you to work for 70 hours per. And that's where I have written yesterday's article, 70 hour per week advice for a country like India. What is the way to go? Most corporations in the West and most corporations in Japan and China are formulating smart work. In Japanese, they call it as Sigma rule. They have developed this, uh, I forgot the name, but uh, it's called Kaizen. One second, what is it? Uh, Kaizen. So countries like Japan have a corporate management system called as Kaizen, and it's a very simple method where you make changes incrementally. Instead of focusing on the big goal, they say, hey, well, do one thing, break the goals into chunks and small step at a time. That's what practice of Kaizen is basically. Yeah, Kaizen, that's what they're doing in Japan. Why this is not discussed by the CEOs and billionaires in India? In India, the CEO, an average CEO in India earns 200 to 1000 times more than an average employee in a company. And this is especially true for the IT industry. Whereas, hear me out, for the Japanese company. In a Japanese company, the CEO cannot earn more than 10 to 50 times than an average employee. You heard me right. That's Japanese company. And their salary can go only up by 55% their income compared to their average employee counterpart in their companies. Yet Japanese companies prospering, Japan is prospering, they continue to do well. So why aren't these things discussed when we talk about we need a new work culture, and we need 70 hours per week work, and this is my country, let me work for 70 hours. Why not say this is my country and let me do the work in shorter period of time by breaking down the goals into chunks? Why can't that be a topic of discussion? So I have written these articles in Medium, I have written this article in the blogspot.com. One can easily check it out. And one can check out this book by Professor Clara Mattei, which is Capital Order and How Economists Invented Austerity and Paved the Way for Fascism. She has done some
Very interesting seminars and talks in YouTube. You can check it out anywhere. Neoliberalism. And let me share you economic policy of Pinochet. You will see a lot of parallel to what you see of current Bharatiya Janata Party, basically. What Modi is doing is very, very similar to what a military dictator did. If military dictator did, we say he's a dictator, he's bad. But when a democratically elected government does it, what do you call? How are they different from a dictatorship here? So one can look at Augusto Pinochet government in Chile to understand what I'm talking about. And guess what? Thanks to his economic policy, 1980s was a period where Chile faced its worst currency crisis. 1982 Chilean currency crisis. Type in Google. So it leads to currency crisis. Yeah, it gets worse. If anybody thinks that this policy is going to help, it doesn't help. Has the current austerity policies which I have highlighted of Bharatiya Janata Party, has it improved our Indian rupees value? Has $1 equal to rupees 40 become, as so-called Ramdev Baba once promised back in 2014, saying, hey, if Modi is elected to power, he will make $1 is equal to rupees 40. Instead, it has doubled. Today it is $1 is equal to 83 point some rupees INR. Our value has gone down. That's right. Our value has gone down. And they say dollar has increased, dollar has strengthened. No, globally dollar is weakening. The latest data suggests 25% of international transactions are happening in yuan, Chinese yuan. Dollar is weakening. So Nirmala Sitaraman's statement that dollar became stronger is nonsense. Globally, in almost all countries, trade-wise, dollar is becoming weak. Yuan is rising. So when dollar is becoming weak, our currency should have got better. We should have got $1 is equal to 40 rupees INR, but no, it means our economic policy has deteriorated to such extent that drowning dollar makes our currency continue to worse. And this is thanks to our trade deficit in part, and bank defaulters. Thanks to banking default, that's exactly what's happening. So I have written one article called as improving the Indian currency. You can go and check out that article in the blogspot.com and medium.com as well. Joe K writes, very informative live. Thank you. Okay. We give tax in everything while buying fuel. We give more money in tax than the actual fuel, even though fuel is not a luxury. Yeah, definitely. Fuel is a basic resource, a natural resource, basically, for energy utilization. Agniveer, basically, Agniveer is nothing but privatization of a very critical industry, a very critical sector of India, which is not good.
So Veiled Rose says, hello Veiled Rose. I hope you are seeing the live. So I think with this I have somewhat ended my presentation. But let me share one more thing here before we continue to take callers from viewers and continue with the live. One second. And this is almost like a BJP spokesperson saying this. He sounds more like BJP spokesperson, Sambit Patra. Yeah. Hello, atheist Brahman. Hello. नमस्कारम। जी जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, बताइए। बताएं आज का प्रश्न क्या है? आपका टॉपिक क्या है? अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी। भाजपा का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, वो जो बोलते हैं कि हम भारतीय संस्कृति या भारतीय क्या है इकोनॉमिक कर रहे, नहीं, भारतीय इकोनॉमिक नहीं है ये। जो पश्चिम में जो देश हुए, उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी को अपने तरह बनाया, उसी का ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं भाई, पूरा का पूरा। और ये और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और लेक्चर देते हैं कि हम भारत का कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ अच्छा, पे जीएसटी पे चर्चा किया, डिमोनेटाइजेशन पे चर्चा किया। डिमोनेटाइजेशन पे जो जो बातें कही गई थी कि आतंकवाद रुक जाएगा, उल्टा हुआ, आतंकवाद बढ़ा है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये बोले थे कि भाई इसमें काउंटरफीट करेंसी जो है वो बंद हो जाएगा। काउंटरफीट करेंसी बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अच्छा, ये बोल रहे थे हम कैशलेस इकोनॉमी बन जाएंगे, उल्टा कैश का ही इकोनॉमी चल रहा है पहले से ज्यादा। ठीक है। फिर ये बोल रहे थे कि भाई इससे जो है वो स्विस बैंक में करप्शन रुक जाएगा, उल्टा 2018 के बाद स्विस बैंक में जितना लाखों का हजारों करोड़ रुपया जमा हो रहा है वो बड़ा है। ठीक है। तो जो जो बातें डिमोनेटाइजेशन से कही गई थी वो तो मतलब उल्टा हो रहा है उसका। गलवान वैली चला गया, चाइना लेके चला गया। और कश्मीर में आर्टिकल 370 हट गया, फिर भी आतंकवाद बन रहा है। ठीक है। तो जो जो चीज क्लेम किए गए थे वो सारे क्लेम उल्टे पड़ रहे हैं भाई, यह देखा जाए तो। और मैंने जीएसटी पे चर्चा किया, और मैंने ये चर्चा की सरकार लगातार एजुकेशन बजट कट कर रही है। हमारा एजुकेशन बजट अभी 2.45% है, सोचिएगा। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3.8 ट्रिलियन इकोनॉमी का एजुकेशन बजट 2.4%। सोचिएगा कितना शर्मनाक बात है देश के लिए। एजुकेशन बजट कट कर रहे हैं, हेल्थ केयर बजट कट कर रहे हैं। ठीक है। और साथ में जो मतलब मनरेगा से जिनको शायद फायदा हो सकता था, स्पेशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए जो फायदा होता था, वो मनरेगा का जितना दिन है वो दिन को कट कर रहे हैं। पहले 100 दिन थे, अब 50 दिन तो दूर की बात, अब 20-30 दिन तक भी नहीं पहुंचते मनरेगा के। ये हो रहा है। तो ये चीज हम चर्चा कर रहे थे, और इससे फायदा किसको हो रहा है और इससे हानि किसको हो रही है।
डिमोनेटाइजेशन से हानि तो उसी को हुआ ना जिसने मेहनत करके पैसा बचाया था इमरजेंसी के लिए, कि भाई कभी आपातकाल आ जाए तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जितने छोटे छोटे बिजनेस थे उनका बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि लोगों को लंबा क्यों ही इतना लंबा होता था कि कम से कम 1-2 दिन लग ही जाता वो पैसे चेंज करने में, और वो 1-2 दिन काफी था छोटे छोटे बिजनेस को खत्म कर डालने के लिए, व्यापार को रोकने के लिए। ये हाल हुआ है हमारे देश का। तो हाँ जी, आप बोल ये रहे थे आप कुछ। ये सच में बहुत गलत बात है, आलोचना भी होनी चाहिए थी। हाँ हाँ, तो इसके खिलाफ हम क्या कर सकते पब्लिक को तो मुद्दे उठाने चाहिए। पब्लिक है कि भाई हमको राम मंदिर चाहिए, भाई हमको हैं? वो काशी तो हम मथुरा बहुत बाकी है पिछले वो हो चाहिए। चुके हम्म। हैं। मैं फिर से जॉइन हूँ क्योंकि मेरी आवाज हाँ, अभी आप बोलिए, आप बात कीजिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, आप वापस आ जाइएगा। ओके, तो इफ एनीबडी एल्स वांट्स टू जॉइन द लाइव, और कोई लाइव जुड़ना चाहता है तो मैं उनको भी लूंगा, और हम आगे ऐसे ही बात करेंगे। मैं इनका थोड़ा वेट करूंगा, ये शायद फिर से जुड़ेंगे और हम बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आर्थिक व्यवस्था का जो संरचना है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर सब पूछेगा ऑनियन प्राइस बढ़ गया, वो बोलते हैं कि ऑनियन ही नहीं खाते। कल को टमाटर का प्राइस बढ़ गया तो शायद टमाटर भी नहीं खाते होंगे। आलू का प्राइस बढ़ गया, आलू भी नहीं खाते होंगे। शक्कर का और आपके आटे का और आपका चावल का प्राइस भी बढ़ जाएगा तो बोल देंगे कि भाई हम वो भी नहीं खाते हैं। तो फिर सवाल ये कि वो खाते क्या है? क्या वो सन्यासी है, या उन्होंने कोई मतलब व्रत वगैरह रख लिया है कि ना खाने का? ये फिर उनसे पूछना पड़ेगा। ये हमारे देश के वित्त मंत्री का हाल है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन का। समझ लीजिए, अगर मैं ये बात पब्लिक हो जाए कि दुनिया में डॉलर, यूएस डॉलर वीक हो रहा है, और ये झूठ बोल रही थी निर्मला सीतारमन कि डॉलर स्ट्रांग हुआ है इसलिए रुपये वीक हुआ है, सोचिएगा क्या होगा देश में। ये बात मीडिया क्यों नहीं बताता कि दुनिया में डॉलर वीक हो रहा है? डॉलर वीक होने के साथ हमारा रुपये का वैल्यू मतलब इंप्रूव होना चाहिए था, लेकिन उल्टा खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? जबकि दुनिया में 25% ट्रांजैक्शन अब जो है डॉलर में नहीं हो रहे हैं, युआन में हो रहे हैं, चाइनीज युआन में। अब बोलिए। तो ये मुद्दे हैं हमारे देश के। मैं उनका वेट कर रहा हूं, अगर वो फिर से जुड़ते हैं तो मैं लूंगा। ठीक है, और कोई जुड़ना चाहता है, वो आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। ठीक है। Veiled Rose, yeah, great stream. Thanks for your comment. You can come and join. We can talk. I am anytime free. In case if you are free and you want to come and add some point or you want to talk, because I don't see the BJP's policy in India is any different from the Sunak's policy in UK. UK's economy has also gone a big downturn. So Sunak's policy is not great as well. So we might consider these things in common. Or let's say United States economic policy no different. Any big country which has lot of private property ownership facing this issue. Okay, हेलो, हाँ बताएं जी आपको क्या बोलना है। हाँ सर, हमारे जो ब्रिटिश शासन के बाद जो जितने भी विकास हुए हैं उसके मतलब ये आपको किसी ने मालूम हुए। ओके, और बोलिए। नहीं हमारे आप जितने हम्म बताएं। ये डिमोनेटाइजेशन पे और जीएसटी पे आपका क्या सोचना है? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता इसके ऊपर ओके, क्योंकि तो मैं आपको नहीं लगता?
बताएं। बताएं। हाँ ठीक है, ये अर्थव्यवस्था शायद आपका टॉपिक नहीं होगा। ओके। हाँ लेकिन धर्म को लेकर के तो बहुत गलत प्रचार होता है ना यूट्यूब पे, झूठ बातें तो बताई इसका जाती है। इसका पूरा इसका जिम्मेदार पूरा सोशल मीडिया जिम्मेदार है। सोशल मीडिया है। हाँ मोदी से मतलब पहले मोदी से पहले बताएं। आप ही बताएं। बताएं पहले। आप ही बताएं पहले। नहीं आप कुछ बोल रहे थे ना मोदी से पहले, आप कंटिन्यू कीजिए। जो हमारी भाजपा जो है, हमारी इससे पहले भाजपा है इससे पहले धर्म इतना भी मतलब इतने मतलब ज्यादा न्याय इतनी दंगे ज्यादा नहीं न्याय होते थे, दंगे नहीं उतने होते बहुत थे, कम उतने होते थे। बहुत कम होते थे। जी और आगे बताएं। मैं तो खाना खा मैं रहा हूँ, तो तब खाना तक खा रहा आप हूँ, मुझे तब तक बताइए आप कि ब्रिटिश शासन के बाद ब्रिटिश जितने शासन भी के बाद जितने हमारे भी विकास हुए हमारे हैं विकास उसके लिए हुए हैं कौन उसके जिम्मेदार है? लिए जिम्मेदार है? क्योंकि हमारे में क्योंकि हरित हमारे में क्रांति, हरित जगत क्रांति, क्रांति, जगत सारी क्रांति, क्रांतियां आती सारी है, वो क्रांतियां आती है, किसने करवाई वो थी? किसने करवाई थी? बिल्कुल। जी आपने बोला, इवन इवन ये जो आजकल आईटी सेल के बंदे वो डिजिटल इंडिया करके यूज करते हैं ना, ये 2 रुपए ट्रोल, वो इंटरनेट और वो क्या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाया किसने इंडिया में, ये भी तो उनसे पूछ लीजिए। तो सही है। जहां तक मुझे लगता जहां है तक मुझे जो लगता है जो चाहे वो चाहे इंटरनेट के वो तौर पे, इंटरनेट के तौर के पे, तौर पे हो, वो कांग्रेस ने वो किया है। कांग्रेस ने किया है। आप अगर भारत का पॉलिटिकल हिस्ट्री और थोड़ा इकोनॉमिक हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, ज्यादातर सारे जितने आप प्रोडक्टिव काम है सब, इवन जो आज मोदी क्रेडिट लेते हैं ना अपने नाम का, उसमें से 50 to 80% काम कांग्रेस ने ही शुरू किया था, इन्होंने बस कंप्लीट किया। तो सारा काम कांग्रेस ने ही शुरू किया है और बहुत हद तक उन्होंने ही चेंज लाया है, सब कुछ देखा जाए तो उस हिसाब से। बात यह है कि आज बात तक यह है तो कि जो आज तक तो जो अब देखते नहीं है कि आज देखते नहीं है मतलब क्या आज हो रहा है, वो मतलब तो बस क्या हो मोदी रहा है, तो दिखते हैं। बस मोदी दिखते हैं। हम्म। जब मैं मोदी से कक्षा कक्षा पढ़ाया गया था हरित क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति में सब में अठारह सौ सब के बाद 1800 मतलब के 1900 में बाद जाता, 1900 और में यह जाता, सब और यह सब कांग्रेस ने करवाया था। कांग्रेस ने करवाया था। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कांग्रेस से मैं भी अग्री नहीं करता, उनका भी शायद इकोनॉमिक पॉलिसी उतना ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम जो मोदी से पहले जितने भी चेंज लाए, इवन वाजपेयी जो है वो कांग्रेस का ही पॉलिसी कंटिन्यू कर रहा था, वो भी कुछ अलग चीज नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी देखा अरे भाई अर्थव्यवस्था के लिए तो हम वही करेंगे जो कांग्रेस ने किया था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने किया था या राजीव गांधी की सरकार ने किया था, उसी को उन्होंने भी कंटिन्यू किया। तो पॉइंट ये है ना कि भाई सारा चीज तो कांग्रेस ने शुरू किया है, तो फिर झूठ क्यों बोलना कि भाई 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। 70 साल में तो इसरो ने भाई राकेश शर्मा को बेच दिया स्पेस में, और अब बात कर रहे हो कुछ नहीं हुआ। हाँ, डीआरडीओ बना के दिया, इसरो बना के दिया, आपको जो है क्या बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HEL वो बना के दिया, इतने सारे कंपनियां हैं भारत के। तो मैं यही कहना मैं चाहूंगा, यही जो कहना मोदी चाहूंगा जो है मोदी मुझे यहाँ पे आके आपसे पे मिलना आके चाहिए। आपसे मिलना चाहिए। हाँ, कोई ऐसे भक्त आते हैं तो हम भी उनसे डिबेट करेंगे और थोड़ा उनसे हम पूछेंगे भाई, ये जो डिमोनेटाइजेशन किया था, ये जो जीएसटी लगाया सरकार ने, ये भाई क्या है, ये जरा मेरे को जरा समझाओ, क्या समझते हो तुम, इसका फायदा किसको हो रहा है और इसका हानि किसको हो रहा है, ये बताओ। कुछ भी क्लेम करेगा ना और उसका झूठा निकला तो वहीं उसको पकड़ के धुलाई करो, मैं ये बोल रहा हूँ। सही है। सही है। कोई बोल रहे हैं ना 5,000 रुपए का भी सिलेंडर हो जाएगा, खरीद लेंगे, ये 5,000 तुम्हारा बाप ला के देगा क्या पैसा, या तुम खुद कमा रहे हो 5,000? 1,000 रुपये तो कमा नहीं पा रहे हो, नौकरी तो है नहीं, और तुम बोल रहे हो 5,000, 5,000 उधार से खरीद के लोगे क्या सिलेंडर के लिए भरने के लिए पैसा? जॉन द भक्त बोल रहे टीवी पे। वो सोशल मीडिया वो में सोशल जीते तो मीडिया में जीते तो सोशल मीडिया में मोदी मोदी करना मोदी है। मोदी करना है। हाँ ये तो बात सही है, ये पूरा पागलपन है, और जी इस पे हम चर्चा करेंगे।
ठीक है, कोई और बात नहीं है तो मैं दूसरे कोई व्यूअर को लेना चाहूंगा, देखते हैं। ठीक है। ठीक तो है। हमारा, हाँ हाँ, हमारा फ्राइडे और संडे को 7 PM लाइव चलता है मेरे चैनल का, संडे को और फ्राइडे को हर हफ्ते। ठीक है, कोई नए नए टॉपिक के साथ। ठीक है। तो ये आपका तो चैनल है ये, ना? हाँ, ये मेरा चैनल है, ये है। ठीक है, अगली बार आर्य समाज के ऊपर बात करेंगे। देखिए आर्य समाज जो है ना, आज देखिए आर्य समाज का शुरुआत में क्या था। आर्य समाज, अगर आप दयानंद सरस्वती का अगर आप पढ़ेंगे ना, वो सत्यार्थ प्रकाश, आप वेद को हटा दीजिए, वेद और वो क्या बोलते हैं मनुस्मृति साइड को रख दीजिए, वो तो भाई एथिस्ट हुए फिर। 90% तो वहीं के वहीं नास्तिक एथिस्ट। बस क्या मान रहे, वेद को मान रहे, वो ईश्वरवाणी मान रहे, मनुस्मृति मान रहे और वो उपनिषद को मनुस्मृति मान नहीं रहे। मानते। मैं गया था आर्य समाज के गुरु के वहाँ तक मतलब बंदे थे। वो कहते थे मनुस्मृति भी नहीं मानते, पर वो दूर दूर गए। अच्छा, भाई दयानंद सरस्वती तो मानते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, वो तो खुद लिखे हैं कि मनुस्मृति जो है वो जरूरी है एक शिष्य को पढ़ना है तो आर्य समाज में। वो तो खुद लिख रहे हैं। उनका 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 पहले चैप्टर में ही लिखा है कि भाई मनुस्मृति जो एक वैलिड शास्त्र है। वो पौराणिक शास्त्र को नहीं मानते, लेकिन वो बोलते हैं मनुस्मृति एक अच्छा शास्त्र है, इसको अध्ययन करना चाहिए। मेरी कल एक डिबेट हुई थी बंदे से। उसने बोला था कि मनु महाराज है ना, उन्होंने ब्रह्मा ने वादा किया था, जो वो वेद मतलब वेद के बाद बाकी जगह वेद कुछ नहीं लिखेंगे। जो तो बाद में जब मैंने मनुस्मृति का कुछ नहीं बताया, तो वो कह रहे हैं ये सब फर्जी हो गया, और जो अथेंटिक बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो वेद के साथ हैं, वही सच है। उनसे उनसे बोल देना चाहिए था, ये जो सत्यार्थ प्रकाश है भाई वो भी फर्जी है, चूतियार्थ प्रकाश में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश भी फर्जी हुआ फिर। सत्यार्थ प्रकाश में आप पढ़ेंगे बार बार, दयानंद सरस्वती जो है वो मनुस्मृति का कोट कर रहा है भाई, मनुस्मृति से श्लोक उठा के कोट कर रहा है और अपनी बात रख रहा है, और उपनिषद से कोट कर रहा है। ये क्या बकवास है कि भाई मनुस्मृति नहीं सत्यार्थ प्रकाश जो कहा जाता है ना बाइबल ऑफ आर्य समाज, उसमें तो बार बार कोट किया गया है मनुस्मृति को, उन श्लोकों को। तो उनका कितना भी वो अगर कहे ना मैं महाभारत मानता हूँ, वो बाद में यही कहेंगे कि मैं वेद विरुद्ध नहीं मानता, और वेद विरुद्ध जो भी आएगा वो नहीं मानेंगे, चाहे वो मनुस्मृति नहीं क्यों ना तो आए। उनसे 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 बोल देना चाहिए ना कि भाई आप, इसका मतलब 90% एथिस्ट हुए, क्योंकि आज के जितने भी हिंदू हैं वो पौराणिक शास्त्र को मानते हैं। आज जितने भी त्योहार मना रहे, चाहे दीपावली हो या दशहरा हो या क्या बोलते हैं आपका नवरात्रि हो, ये सारे तो पौराणिक त्योहार है। वेदों के कौन से त्योहार है ये मेरे को बताइए, इनसे पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे आपको। ये वो तो चीजें सीधा हैं। बोल देते थे, पूछा तो नास्तिक का अर्थ क्या है, उन्होंने बोला जो वेद विरुद्ध आचरण करते हैं वही नास्तिक है। तो आर्य समाजी कहते हैं मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं वेद विरुद्ध आचरण नहीं करता। अच्छा, खैर ये देखिए आर्य समाज पे मैं फिर से कभी लाइव करूंगा या टॉपिक रखूंगा तो उस पे देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे मेरे पास टॉपिक पड़े हैं, उसको हमें कवर करना है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए। ओके, तो चलता हूँ। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। ओके ओके ओके। So if anybody else wants to join the live and talk with me and share your viewpoint, I think Veiled Rose is there and many others are there. I don't know if anybody else is there, they can come and join the live. We can continue with this stream, or if you want to talk, you can talk. If you're not talking and if you feel that it's kind of become boring, then I'm ending my stream. It's already 1 hour. So yeah, just let me know if you want to talk, or if anybody wants to join, if they want to debate, or if they want to keep a point, or even crack jokes. If anybody wants to come and join the live, I have pinned the StreamYard link. In case if you don't see the StreamYard link, I'm sharing the StreamYard link again so that you can come and join the live. Let me know. Okay. So let me know if you can join the live.
पंजाब दिया मौजा, हाय एवरीवन, जय अखंड भारत। भाई अखंड भारत को छोड़ो, पहले भारत को ही खंड अखंड बना के रखो भाई। अभी का जो भारत है। जय व्रत पंजाब दिया मौजा। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जय व्रत, आपका नाम क्या है? जयंता डिबेटर, ओके। अब हाँ, व्हाट डू यू वांट टू से? देखिए, मेरा नाम आप प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे, इसलिए अच्छा ठीक जयंत है, बोलिए। चलिए चलिए चलिए, मैं आपका जो भी स्ट्रीम है वो म्यूट कर लेता हूँ। पंजाब दिया मौजा म्यूट कर तो लिया। भाई कैसे हो? सलाम। एक हाँ मिनट देना भाई, मेरे को, मैं निकल लूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, म्यूट कर लो भाई भाई, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हाँ। एक मिनट, अब मैं बात करना चाहता हूँ भाई। ओके। मैं ना आज का इधर आज बैठा का था। स्ट्रीम आज का स्ट्रीम जो था वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के था, और वो कैसे कॉपीड है यूरोप के जो रेजिम्स है, और चिली का जो रेजिम है उससे है इंस्पायर्ड। तो वो टॉपिक था, और उस पे मैंने कुछ चीजें मैं बताई। अभी निकल लूंगा, मैं ना बाहर हूँ। इस पे टॉपिक पे मैं फिर कभी बात करूँ। मैं तो बताना चाहता हूँ ना, एक आया भगत, वो कहता है तेरी अम्मा को ये। मैं बोला मेरी अम्मा तो भाई भारत है, देख ले उसकी लड़की और उसकी मेरी अम्मा के साथ तूने क्या करना सोचा मुझसे करना, वो राजी है। और वो भगत जी निकल लिए थे। अच्छा, थैंक यू भाई। ओके ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हाँ जयंता डिबेटर, यू वांटेड टू स्पीक समथिंग, आपको क्या बोलना है? देखिए, वो जो ये आप जो बोलते हो कि ये बीजेपी आरएसएस, ये तो अ, इंडिया के लोग तो यही पसंद कर रहे हैं आज तक, तो ये खराब कैसे है? भाई पसंद तो लोगों को हिटलर को भी करते थे भाई। पसंद अरे तो नहीं। बहुत नहीं। मेरे बात सुन लीजिए भाई। बात पसंद की नहीं है, बात क्या है, पॉलिसीज की है, ठीक है। लॉन्ग टर्म की है। बीजेपी आरएसएस आपको शॉर्ट टर्म का सक्सेस दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म का नहीं बता रहा है आपको। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल निर्मला सीतारमन, हमारा जो वित्त मंत्री है, वो बोलती है कि भाई हमारा इंडियन रुपी वीक हो रहा है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग है। आप पूरा इंटरनेशनल रिपोर्ट उठा के देख लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। डॉलर कमजोर हो रहा है भाई। पिछले 20 साल में डॉलर अभी तक वीकेस्ट हुआ है डॉलर। तो पॉइंट यही होगा ना कि जो वित्त मंत्री झूठ बोल रही थी फिर कि डॉलर स्ट्रांग हुआ, जबकि डॉलर तो वीक हो रहा है भाई यूएस का, पूरे दुनिया में। पर तो तो पर ये चीजें है ना। अच्छा आप बोल रहे थे आरएसएस है भाई। आरएसएस के बारे में कितने लोगों ने स्टडी किया है, या कितने लोगों ने गोलवलकर के जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ा है? मेरे को बताइए। मेरे वो तो पास तो कोई नहीं इतने सारे पढ़ता। किताब पढ़े हुए हैं उनके, मैंने पढ़ा है। उसी के मेरे बेसिस पर कितने लोग पढ़े हैं गोलवलकर का वो बंच ऑफ थॉट्स वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, कितने लोग वो पढ़े और जाने हैं? तो देखिए, तो ये वो लोग 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 सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मार्स परसेप्शन है। अभी फॉर एग्जांपल दुनिया में बहुत सारे मुसलमान हैं। अब मुसलमान को लगता है ओसामा बिन लादेन बड़ा अच्छा बंदा था, उसको भी सपोर्ट किए। क्या है वो परसेप्शन? मास परसेप्शन। आरएसएस मास परसेप्शन कैसे बनाता नहीं है? परसेप्शन, वो रैली निकालता है, वो किसी ना किसी दहे ये मतलब क्या बोलते हैं रायट्स या दंगे में वो अपना टांग अड़ाता है, नहीं 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 इससे नहीं हेडलाइन बनता है। नहीं नहीं नहीं। लोगों को लगता है अरे भाई हिंदू के लिए भाई ये हमारा कुछ कर रहा है, तो ज्वाइन कर लेते हैं वो तो आइडेंटिटी। कट तो रहा है। क्या? तो राम मंदिर बना दिया। ओके। हाँ। और देश देश की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव कर रहा है, तो फिफ्थ पोजीशन में है। कहाँ? अरे फिफ्थ पोजीशन में तो हम 2010 में भी थे, मनमोहन सिंह के टाइम पे। आपको पता है ये बात? नहीं 2010 तो में थे हम। उस टाइम का आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिएगा। हाँ बीच में हम डाउन हुए थे क्योंकि
बहुत सारे चीजें जो है वो स्लो डाउन हो गया था, लेकिन बाद में हमने ले लिया। अब हाँ मेरा बात सुन लीजिए पहले। हमारे नीचे जो कंट्री है, जैसे फ्रांस है, इटली है, यूके है, वो अगर अपना इकोनॉमी सुधार लेंगे तो कल को वो 5th पोजीशन पे आ जाएंगे भाई, इंडिया चला जाएगा नीचे। तो आप नेबरिंग कंट्रीज से देखिए, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब से तो इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, नो डाउट। हम बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश का अगर आप देखेंगे तो हाँ, उनका पॉपुलेशन भी कम है और साइज भी कम है, ठीक है, मान लिया कि हाँ हम उनसे बेटर है, नो डाउट। अब बांग्लादेश बना ही कब था? 1971 में बना था। उनका हालात उस समय क्या था और अब क्या है, तो ऑब्वियसली ठीक है, वो अभी बहुत सुधरे हैं और शायद और आगे उनके स्कोप बन सकता है। हाँ, नो डाउट हम उनसे आगे हैं, श्रीलंका से भी आगे है। श्रीलंका का वहाँ का वो इकोनॉमिक क्राइसिस, वो करेंसी गिर गया उनका, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है। ये सब तो बीजेपी भी कर रहा है ना। बीजेपी कैसे कर रहा है? आपको ये देखिए, बताना चाहिए कि सीएमआई का जो रिपोर्ट है वो बोलता है 10% जो लोग हैं उनके पास तो नौकरी ही नहीं है। आपको पता है हर साल, इस साल जो कंपनी है, टेक कंपनी है, उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को निकाला है, ले ऑफ। और आपको पता है अफगान का जो करेंसी अफगानी, वो हमारे करेंसी से बेटर है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अफगानी जो है वो $1 इक्वल टू 75 है। इंडियन रुपी जो है वो $1 इक्वल टू 83 INR है। अफगानी हमसे कैसे बेटर परफॉर्म कर रहा है भाई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा है, ठीक है, वो शायद उतनी जल्दी नहीं सुधरेंगे, लेकिन हमारे लिए भी तो सोचना है ना कि भाई दुनिया में डॉलर इतना कमजोर है कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है उन्होंने अपना करेंसी मतलब बेटर कर लिया, हमारा करेंसी क्यों बेटर नहीं हो पा रहा है? ये तो हमारे लिए क्वेश्चन होगा ना फिर। ये सोचने की विषय है, पर इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, बेटर आदर्श परफॉर्म मीडिया मोदी जी में की वजह से। इंडिया परफॉर्म बेटर कर रहा है क्योंकि मीडिया पूरी चीजें सच्चाई नहीं दिखाती है। आपको मीडिया उतना ही दिखाएगा जितना मोदी जी G20 का मीटिंग करके आए। जी हाँ, ट्वेंटी का पर जी मेरा एक बात सुनिए, G20 के लिए पैसा खर्च किया, एड लगाया, ठीक है। G20 के मीटिंग का जो फायदा है, इतने सारे कंट्री को बुला के जो किए, वो फायदा किसके लिए है? हमारे किसानों के लिए है, हमारे मजदूरों के लिए है, गरीबों के लिए है, या फिर चंद अरबपतियों के लिए है? ये तो देश की फायदा है ना। कैसे कैसे फायदा है? अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका में चंद बिलियनर चलाते हैं, लेकिन अमेरिका के पास खाने के लिए नहीं है भाई। इवन वहां का जो आर्मी के लोग हैं अमेरिका में, जो पहले वहां के आर्मी के लिए काम कर चुके हैं, उनके पास घर नहीं है खरीदने के लिए, सड़क में रहते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट पड़े हुए हैं इसके। चलिए मान लीजिए हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो ही जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने में कोई आपत्ति नहीं और अच्छा ही है, हो ही गए। मान लीजिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए, ठीक है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से आप क्या चाहते हैं कि 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन जो वो 1 या 3% के हाथ में हो, और बाकी जो 97% है वो जो 1 ट्रिलियन कंट्रोल करे? ये ऐसा तो आपको नहीं है। ये ये आपको सोच के अजीब नहीं लगता है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया में सबको अपॉर्चुनिटी देता है सरकार। अब कोई ले नहीं सकता, इसमें तो सरकार की गलती नहीं है। अरे भाई, अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी तो सेक्टर होने चाहिए। तुम बस मोनोपोलाइजेशन करो, कुछ चंद कंपनियों को दे रहे हो, और जो बाकी सेक्टर तुम बना सकते थे अच्छा कॉम्पिटिटिव, फ्री मार्केट जो है एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, ठीक है।
यहाँ पे फ्री मार्केट का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी नहीं है भाई, आप मोनोपोलाइजेशन कर रहे हो। यहाँ पे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट कहाँ है? जब कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होगा तब ना आप जो अभी बोल रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी देता है तो अपॉर्चुनिटी ले सकता है। अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो देगा कौन यहाँ पे? देखिए और जितना अपॉर्चुनिटी है उसके लिए पॉपुलेशन कितना है वो भी आप देख लीजिए। आपको लगता है मैं मजाक नहीं कर रहा, आप एक चीज बताइए, 2-3% का पॉपुलेशन है, 1-2% का अरबपतियों का ही मान लीजिए पॉपुलेशन है, वो जितना कंपनी बना रहे हैं क्या वो उतना कंपनी सबको नौकरी दे देगा? नहीं दे सकता। तो इसलिए तो आपको चाहिए पब्लिक सेक्टर, अच्छा खासा पब्लिक सेक्टर चाहिए, आपको कोऑपरेटिव सेक्टर चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल लिज्जत पापड़ जो है वो एक जो कंपनी है वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर है। आपको ऐसे बहुत सारे सेक्टर चाहिए। आप बस अमेरिका का देख लिया, अरे वहाँ प्राइवेट कंपनी है, चंद वो अमीर हो गया, अरे भाई हम भी कर लेंगे। नहीं भाई, इंडिया, अमेरिका और इंडिया में बहुत फर्क है। अमेरिका में भी अभी के अमेरिका और पहले के अमेरिका में तुलना करेंगे तो पहले के अमेरिका में बहुत सारा प्राइवेट कंपनियों का ये नहीं था, पब्लिक सेक्टर ओनरशिप, ठीक है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंदर था। ये रिसेंटली उन्होंने बदला है बिल क्लिंटन और रोनाल्ड रेगन के आने के बाद, ठीक है। इंडिया में क्या है? इंडिया में हमेशा से पहले तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, राजीव गांधी के टाइम तक। 90s में नरसिम्हा राव की सरकार आई, उन्होंने बदलाव किया कि भाई बना, प्राइवेट कंपनियां भी कंपटीशन में आई, वो थोड़ा बेहतर था, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर भी पहले से थोड़ा था और शायद और आगे बढ़ सकता है। तो हमको क्या चाहिए? हमको हेल्दी कंपटीशन चाहिए ना। आप जो बोल रहे हैं कि सबको मौका देता है, कहाँ दे रहा है? ये देखिए देने के मैं लिए तो मोनोपोलाइजेशन में कहाँ हो सकता है? देखिए मैं बोलता हूँ। देखिए मेरे तो माँ बाप अनपढ़ है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। मैं तो ग्रेजुएशन किया, कंप्लीट किया, एक सरकारी विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा इंडिया में रहते हुए। देखिए, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा, लेकिन ठीक है, वो आपकी मर्जी में, आपका वो नहीं बोल रहा हूँ, आपका वो परसेप्शन गलत है, या आपका परसेप्शन है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। मैं जितना जो ऑफिशियल रिपोर्ट भी देखा और जो जिस चीज़ों को मैं पैरामीटर को मैं देख के बात किया हूँ, जो मैंने देखा है उस पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बोलने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ मेरा पर्सनल लाइफ अच्छा है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं हुई, तो ठीक है, मैं भी चुप हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक न्यूज़ एंकर भी बोल सकता है कि भाई अच्छा, एक न्यूज़ एंकर को हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर भी बात नहीं करना चाहिए। मुसलमान ने तो उन पे तो अटैक नहीं किया, कोई जिहादी ने तो उन पर अटैक नहीं किया, तो उनको बात नहीं करना चाहिए, फिर क्यों करते हैं? हम ऐसे ही आर्गुमेंट दे सकते हैं कि एंकर को भी, टीवी एंकर को, नहीं, अब कि तो आपने राम देखो मंदिर तो बन रहा है ना। अरे भाई, आप राम मंदिर बना लो भाई, चाइना जो है वो एक आर्टिफिशियल मून बना लिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाइना ने एक आर्टिफिशियल मून बना लिया। देखिए राम मंदिर से सरकार को इनकम होगा, हमें भी इनकम होगा, अर्थनीतिक दिक से बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, देश को मैं तरक्की होगा। मेरा एक सवाल है, आप मानते हैं कि भारत में जितने मंदिर है वो, भगवान हो या ना हो उसको साइड में रख दो, ये हाँ बस एक पैसा कमाने का जरिया है, आप इतना तो मान सकते हैं ना? हाँ, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होता है मंदिर से। इकोनॉमिक जिस कंडीशन को सही, पैसा कमाने का जरिया है कि नहीं है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, बहुत सारे जरिया है है वो, ना? हाँ। सिर्फ अब पैसा मेरी बात नहीं है। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे को बताइए कितने ऐसे मंदिर है जहाँ पे कारीगर जो है, जो मेंटेनेंस का काम करता है, हेलो, कारीगर सुन जो रहा है, हूँ। जो उस मेरा सवाल सुन लीजिए। अब मंदिर तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे 20 लाख मंदिर है इंडिया में, ठीक है, कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, और लाखों करोड़ों अरबों का बिजनेस है ये, ठीक है। मेरे को बताइए, मंदिर जो है इसमें जितने कारीगर होते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, जितने सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं उनका, हम्म, और जितने मतलब आपके फूल बेचने हम्म, और मंदिर में जो आसपास सफाई का काम करते हैं वो लोग का,
ठीक है, और जो मतलब मंदिर में डेकोरेशन का काम करते हैं वो लोग को, मेरे को बताइए इनका इनकम कितना है और मंदिर में जितना डोनेशन आ रहा है और उस डोनेशन में जो ट्रस्ट जो पैसा ले रहा है उनका कितना, आप जरा बताइए। हाँ, अगर कारीगर लोगों को फायदा हो रहा है, कारीगर लोगों को उतना ही पैसा मिल रहा है जितने लगभग ट्रस्ट के लोगों को मिलता है, कारीगर को, फूल बेचने वालों को, डेकोरेशन करने वालों को, और साफ सफाई कर्मचारियों को, और सिक्योरिटी पर्सनल्स को मिला करके, ठीक है, इन सबको मिला करके उतना ही पैसा मिलता है जितना पूरा ट्रस्ट को मिलता है डोनेशन में। ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है दोनों के बीच में, तो आप बताइए क्या फायदा इसमें। देखिए फायदा होता है, मैं देखता हूँ फूल जो बेचता है उसका दुकान बड़ा हो गया अरे भाई छह मैं साल भी में। पूछ रहा हूँ, फूल बेचने वाला जो है, आप उनको 1,000 रुपया दे रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, वहां पे हुंडी में आप करोड़ों रुपये का आप एक डायमंड डाल के आ रहे हो। डायमंड कौन ले रहा है भाई, वहां का पुजारी ले रहा है या ट्रस्ट ले रहा है? मैं ये ये बोल तो रहा हूँ कि कम से कम क्या ऐसा हो सकता है व्यवस्था मंदिर में कि भाई ट्रस्ट को जो पैसा मिलता है वो थोड़ा बांटे लोगों में, और ट्रस्ट अकेले डिसीजन लेने के बजाय ये कारीगर लोगों को भी शामिल करे। अगर ट्रस्ट डिसाइड करता है कि भाई मंदिर का मेंटेनेंस ऐसे करेंगे, हम मंदिर को ऐसे चलाएंगे, हम इतना बजट रखेंगे इस साल के लिए, अगले साल के लिए ये बजट होगा, मैं ये पूछता हूँ सिर्फ ट्रस्ट के चंद लोग क्यों ले रहे डिसीजन? इसमें हम क्यों मंदिर में जो मेंटेनेंस का काम करते हैं कारीगर जो है, जो मतलब फूल बेचने वाले हैं, और जो साफ सफाई कर्मचारी और जो सिक्योरिटी पर्सनल है, उनको हम क्यों इन्वॉल्व नहीं करते इस चीज में, डिसीजन मेकिंग में? क्यों ना ये एक बेटर सिस्टम लाया जाए, आप मेरे को बताइए। देखिए वो तो है, एक जो फूल बेचता है उसका भी एक संगठन है। हाँ, और जो मैं वही वहाँ बोल पे रहा हूँ, हलवा नो पूरी भी डाउट, बेचता नो है डाउट, नो उसका भी डाउट, एक संगठन नो है। डाउट, मेरे को बताइए मंदिर को ट्रस्ट चलाता है ना, ट्रस्ट कितनी बार इन लोगों को इन्वॉल्व करता है? अब ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि हम 10 करोड़ जो है वो आज के इतने लोग विजिटर को देंगे, 10 करोड़ जो है वो दुकान वालों को देंगे, आसपास के 10 करोड़ जो है वो हम कुछ सफाई कर्मचारियों को देंगे, ये वो डिसाइड ले रहा है। कुछ तो देता हालांकि है। अरे भाई कुछ देता नहीं, बात सवाल कुछ देता का नहीं है, बात सवाल है यहाँ पे एक मान सम्मान का, घुट घुट के जीने के बजाय एक मान सम्मान के साथ जीने का, यहाँ पे एक सम्मान की बात मैं कर रहा हूँ। मेरे को बताइए ट्रस्ट में जो व्यक्ति है उसको तो सम्मान मिलता है, मेरे को बताइए मंदिर के बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनको कितना सम्मान मिलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, वो तो काम कर रहा है, वो तो पैसा कमा रहा है, वो तो ठीक है सर। आप आप नहीं देख, चाहते कि इस व्यवस्था में थोड़ा एक अच्छा चेंज लाया जाए? मंदिर रख लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, मैं तो बोलता हूँ काशी का भी मंदिर बना लो, मथुरा का भी मंदिर बना लो, कोई भी मंदिर बना लो आप, कम से कम गारंटी है इसमें कि भाई जो एक गरीब व्यक्ति है वो भी एक अच्छा खासा सम्मान का जिंदगी जी सकता है, मैं वो बात कर रहा हूँ, सम्मान की जिंदगी। ऐसा नहीं कि भाई मंदिर में तुम काम तो कमा रहे हो और थोड़ा पैसा मिल गया और लोग तुम्हें तुम्हारे पीठ पीछे ताने मार रहे हैं, ये तो भाई चपरासी है, अरे ये तो शूदर है, चल निकल यहाँ से। अरे चल भाई, काम करना है तो वहां जाके करो, मेरे सामने मत करो, ताने मारने, ये क्या है मेरे को बताइए। कम से कम ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ वो तो चेंज हो रहा है सर। हाँ, मैं उसी का बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो चलिए आज, ठीक है, चलिए थैंक यू सर। हाँ। मैं स्ट्रीम को यहाँ एंड कर रहा हूँ, आपसे बात करके अच्छा लगा। अच्छा, ये चले गए, ओके। तो इसके साथ मैं आज का लाइव एंड करता हूँ, नेक्स्ट टाइम लेट्स मीट विद सम अदर टॉपिक, होप एवरीवन एंजॉयज, बाय, गुड नाइट।